हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु आज एथिक्स आउ गोटे क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। रिसेंटली ए क्वेश्चन टी 2025 UPSC CSE रे आसी। चलतु ए क्वेश्चन टी को डिस्कस करिबा। बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. India is an emerging economic power of the world as it has recently secured the status of fourth largest economy of the world, as per IMF projection. However, it has been observed that in some sectors, allocated funds remain either underutilized or misutilized. What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of third largest economy of the world in the near future? Friends, चलते ए जानिबा ए क्वेश्चन टी को सिलेबस रे आछे. ए क्वेश्चन टी आसी अछि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड व्हिच इज द प्रोबिटी इन गवर्नमेंट. तो फ्रेंड्स, जिते भी क्वेश्चन टी को एग्जामिनेशन हॉल रे पिला माने देखंती जेते क्वेश्चन टा बहुत बड़ होई थाए, दे ऑफन गेट कंफ्यूज्ड. So they have to breaking the question into important keywords. These keywords actually tells the student what exactly UPSC या OPSC wants. ठीक अछि फ्रेंड्स, चलते पे देखिबा ए क्वेश्चन रो कीवर्ड्स कनो. फर्स्ट है इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, सेकंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फोर्थ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, fifth ensuring accountability, stopping leakages, becoming third largest economy, measures or recommendations. Friends, now let's understand each keywords one by one. So the first one is emerging economic power. So emerging economic power means India is rising fast in the world economy and becoming a major global financial power. ठीक अछि. Then second is fourth largest economy. So IMF has projected India as the fourth largest economy in the world. तो ए पॉइंट टाको स्टूडेंट्स माने इंट्रो एंड कंक्लूजन रे मध्ये लिखि परिबे. ठीक अछि. तापर असला हमर अंडर यूटिलाइज्ड फंड. अंडर यूटिलाइज्ड फंड्स मींस मनी इज नॉट फुल्ली यूज्ड इवन दो इट इज अवेलेबल. ठीक अछि, मनी अवेलेबल अछि किंतु से फुल्ली यूज हे पाइ नाही. सो दिस इज द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Then misutilized fund. The misutilized fund means money is used wrongly or for the wrong purpose. मतलब फॉर एग्जांपल फंड्स फॉर रोड्स यूज्ड इन पॉलिटिकल इवेंट्स. मतलब रोड्स तैयारी पे फंड्स आस्थिबो किंतु सेटा को हमें पॉलिटिकल इवेंट्स लगे दिया हेतिबो. सो दिस इज द मिसयूटिलाइज्ड फंड. सो दिस इज द अनदर मेजर प्रॉब्लम एरिया इन द क्वेश्चन. ठीक अछि. देन असला हमरा लीकेजेस. स्टॉपिंग लीकेजेस मतलब corruption, diversion, wastage of money going to middlemen and ghost beneficiaries. So this is the ethical part of the question. ठीक है जी, this is the ethical part of the question. Then allocated funds. Allocated funds मतलब there are the funds given by the government for different sectors like the health, education and infrastructure. Friends, now come to the next point, that is ensuring accountability. Friends, you know accountability means responsibility plus answerability of officers and institutions for how they use government money. ठीक अछि. So this is the main demand of the question. A question रे say ensuring accountability होची main demand. ठीक अछि. Now come to the next point, that is measures or recommendations. So these are the solutions we must write. ठीक अछि. इस मेजर्स एंड रिकमेंडेशन मतलब आमे कोन मेजर करिबा या कोन रिकमेंडेशन करिबा से ए प्रॉब्लम्स रो सॉल्यूशन पाए. ठीक अछि. दिस कीवर्ड्स रिमाइंड अस टू राइट सॉल्यूशंस. ठीक अछि. कोन सॉल्यूशन सामने बा PFMS, that means public finance management system, DBT, direct benefit transfer, social audit and CAG report. Friends, चलते ए देखिबा अदर एथिकल कीवर्ड्स जाको हम एक क्वेश्चन रे यूज करि परिबा. ठीक अछि. तो फर्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी हियर इन दिस क्वेश्चन, दिस अकाउंटेबिलिटी इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी मीन्स एंश्योरिंग रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स. ठीक अछि. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमरा ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स नीडेड टू प्रिवेंट लीकेजेस एंड करप्शन. देन थर्ड पॉइंट इज
Integrity मतलब honest use of public money by officials and institutions. Then fourth point is probity in public life. Probity in public life मतलब high moral standards in handling public funds. ठीक अच्छे एसबू को मध्य आमे आम क्वेश्चन आंसर राइटिंग रे आम एसबू पॉइंट को मध्य लिखि परिबा. ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रूल्स डाटा एंड नीड नॉट पर्सनल बायस. Now come to the next point, that is responsibility. Responsibility मतलब duty of public officials to ensure funds reach the intended beneficiaries. ठीक है तापर आसला हमरा ethical governance. Ethical governance means using values and principles to prevent misuse or underutilization of funds. Then public trust. Public trust means proper fund utilization builds trust between the citizen and the government. Then rule of law. Proper monitoring, auditing, legal action for food misuse. Then as last, code of conduct and code of ethics, the guiding behavior of public officials in financial management. Next, conflict of interest, matlab misutilization often arises when personal gain influences public decisions. ठीक है. Then accountability mechanisms, audit, social audit, CAG report, vigilance, ethical tools for governance. Then empathy and public service motivations, using funds effectively to serve citizens, especially vulnerable groups. Vulnerable groups मतलब tribal groups. फ्रेंड्स ए क्वेश्चन रे हमें बुझिले ए क्वेश्चन रा एक्चुअली को सिलेबस रो आछि ए क्वेश्चन रे कोन कीवर्ड्स अछि ताको मध्ये बुझिले ता सहित आउ कोन एथिकल कीवर्ड्स ए क्वेश्चन रे यूज हे परिबो से कथा मध्ये हमें बुझिले. ठीक अछि एबे चलंतु आंसर राइटिंग को जिबा. सेटे फास्ट हमें इंट्रो देखिबा. इंट्रो तापरे देखिबा बॉडी पार्ट्स. सो फ्रेंड्स इंट्रो रे हमें डाटा बेस्ड फैक्ट भी लिखि परिबा नले कोट बेस्ड फैक्ट भी लिखि परिबा. तो एठी इंट्रो में फास्ट लिखिबा व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज बोथ ए लीगल ऑब्लिगेशन एंड ए मोरल इंपेरेटिव. It reflects Kautilya's principles of responsible stewardship, Max Weber's bureaucratic efficiency, and Gandhian trustship, ensuring public funds are treated as a trust for citizen welfare. ठीक अच्छे ये आम इंट्रो रे आम ए पॉइंट गुडी को आम लिखि परिबा. नहले आम लिखि परिबा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आम सिंपल गोटे इंट्रो भी निज मन रो भी आम लिखि परिबा. पब्लिक फंड्स आर द लाइफ लाइन ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली इन ए कंट्री वेयर वेलफेयर स्कीम्स रीच मिलियंस. However, India frequently faces challenges such as underutilization, misutilization, and leakage of funds. So this not only delay development but also weaken public trust. Ensuring accountability, ethical, administrative, and financial, therefore become essential to guarantee that every rupee allocated for public welfare translates into real outcomes in the ground. ठीक अच्छे तो ये सब आम इंट्रो लिखि परिबा. बतन जे आम बॉडी पार्ट्स को तो बॉडी पार्ट्स रे आम सेम टू सेम लिखिबा तार हेडिंग जहां को क्वेश्चन रे पचारचे. तो फास्ट देखिबा व्हाई फंड्स आर अंडर यूटिलाइज्ड और मिस यूटिलाइज्ड. फास्ट बॉडी पार्ट आम लिखिबा पब्लिक फंड्स ता अंडर यूटिलाइज्ड काहे की होची किबा मिस यूटिलाइज्ड काहे की होची तार रीजन से बुझिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज मतलब डिले इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स. तो ये सब कारण भाई आमर पब्लिक फंड्स ता अंडर यूटिलाइज्ड होची आ मिस यूटिलाइज्ड मध्ये होची. नाउ कम टू द नेक्स्ट रीजन दैट इज फाइनेंशियल लीकेजेस. फाइनेंशियल लीकेजेस मतलब ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू घोस्ट बेनिफिशियरीज इन वेलफेयर स्कीम्स. And the third point is systematic issues. तो systematic issues मतलब weak monitoring and evaluation systems, outdated financial reports, and delayed in release of funds. Another point है political and structural constraints. That means frequent transfer of officials, political interference, and lack of decentralization and accountability. तो फ्रेंड्स एबे हम जानिले काहे की पब्लिक फंड्स यूटिलाइज मिस यूटिलाइज्ड होची आ अंडर यूटिलाइज्ड होची. एबे तार देखिबा कोन हम स्टेप्स नेबा बा कोन हम स्पेसिफिक मेजर्स करिबा टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. सो फर्स्ट वे इज ethical measures मतलब value based solutions नेबा. सेकंड इज practical measures that means system based solution नेबा. So now let's understand what is ethical measures
to ensure accountability. So first one is integrity in public office. So integrity in public office means officials must use funds honestly, not for personal benefit. That means से ऑफिस रे जी भी काम करुथिबे से honestly काम करिवे कि बल्कि तांकर पर्सनल बेनिफिट पे काम करिवे. फॉर एग्जांपल जेमते रिफ्यूजिंग ब्राइब्स. ठीक अच्छे. तो सेकेंड है हमारा ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस मस्ट बी ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटिनिटी. तो जिते फाइनेंशियल डिसीजंस होची ताको पब्लिकली ओपन करिया दरकार. फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स. ठीक अच्छे. Then third point है probity and clean financial conduct. So probity and clean financial conduct means disclosing assets following rules. ठीक अच्छे. देन आसला हमारा ऑब्जेक्टिविटी इन एलोकेशन एंड एभालुएशन. तमाने डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन डाटा. तो जेकोसी जे ऑफिसर्स कि सपोज पुलिस ऑफिसर से कौन से डिसीजन नौछन्ते सेटा केवल डाटा ऊपर वैल्यू बेस्ड थिबा दरकार एंड एविडेंस ऊपर बेस्ड थिबा दरकार, नॉट इन फेवरेटिज्म. ठीक अच्छे. देन आसला हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी. ईच ऑफिसर इज आंसरेबिलिटी फॉर टाइमली. तो सभी ऑफिसर आंसरेबल हो पारे टाइम अनुसार आंसरेबल हेबा को बाध्य. सो लास्ट पॉइंट है एठी सिटीजन सेंट्रिक एटीट्यूड एंड एम्पैथी. तमाने एंश्योरिंग डिबिटी मनी रिचेस विडोज, एल्डरली एंड डिसेबल्ड. ठीक अच्छे. नाउ कम टू द practical measures or system based solutions. So चलो तो बुझे गुड़ा सब कौन. तो फर्स्ट वन इज PFMS, that means public financial management system, real time fund trading. ठीक अच्छे. नेक्स्ट इज DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. दैट मीन्स रिड्यूसेस करप्शन एंड लीकेजेस. फॉर एग्जांपल सब्सिडीज एंड पेंशन्स. Then social audit for all schemes like MGNREGA and PMAYG. Then come to the strengthening CAG and internal audit. Then procurement transparency. Procurement transparency मतलब e-tendering, e-auctions, reduces political influence and corruption. Then whistleblower protection मतलब encourages insiders to report corruption safely. Then the penalties for misuse. That means strict punishment under Prevention of Corruption Act, financial rules and conduct rules. So friends, body parts में कौन लिख ले why funds are underutilized or misutilized. तो एक सब तार पॉइंट्स लिख ले. तो फंड्स टा केमिति underutilized होची आ misutilized होची. तो फिर नेक्स्ट पेज रे हम देखिले कि तार मेजर्स कौन आम कौन मेजर्स नेले अकाउंटेबिलिटी हो पारिबो. तो हम दुईटा मेजर्स नेले एठी एथिकल मेजर्स, वैल्यू बेस्ड सॉल्यूशंस नेले आ प्रैक्टिकल मेजर्स, सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन नेले. एबे देखिए हमरा वैल्यू एडिशन हमरा कौन हो पारिबो. तो वैल्यू एडिशन हम कौन देखिबा. वैल्यू एडिशन हम लिखिबा एठी फैक्ट लिखिबा, डाटा लिखिबा. DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर saved 2.7 lakh crore by removing leakages. The second data है social audits in Andhra Pradesh reduced corruption in MGNREGA. ठीक है. Then third point है PFMS. ठीक है. PFMS improved fund utilization in PMAYG. Then AI based analysis for fund leakages. ठीक अच्छे. बर्तमान कमिटी और रिपोर्ट कौन देबा. कमिटी देबा हमें सेकंड ARC जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन. रिपोर्ट देबा हमें CAG रिकमेंडेशंस. ठीक अच्छे. फ्रेंड्स चलते भी देखिबा कंक्लूजन में कौन लिखिबा. इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. इंडिया ड्रीम है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी व्हिच इज डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन ग्रोथ. केवल ग्रोथ करदेले जे केवल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो पारिबो सेटा नुह. तामाने सेठी हाउ ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली पब्लिक फंड्स आर यूज्ड. तेणु ता सहित पब्लिक फंड्सटा केमिति ऑनेस्टली और एफिशिएंटली यूज हो पारिबो ता ऊपर मध्ये इंडिया रो इकोनॉमी डिपेंड करता है. ठीक अछि. सो व्हेन एवरी रुपी रिचेस द राइट प्लेस, जेते बेले इंडिया रो सब रुपी को ठीक भाबरे ठीक प्लेस रे पहुँचब सेते बेले आमे कहिबा जे डेवलपमेंट इंडिया रो होइछि. दैट मीन्स डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर एंड फेयरर. ठीक अछि. सो फ्रेंड्स ए क्वेश्चन आमे एपरि फ्लो चार्ट मध्ये यूज कर परिबा. टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी जेंति कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मीडिया अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क प्लेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी ए फ्लो चार्ट को मध्ये हम यूज कर परिबा. आहरी मध्ये ए फ्लो चार्ट को मध्ये हम यूज कर परिबा. Key aspects of accountability, that means ownership, transparency, responsibility, justification, consequences and learning. So ये देटी फ्लो चार्ट को मध्ये हमें आंसर राइटिंग रे हमें लिखि परिबा. ठीक अछि. तो फ्रेंड्स
आज है सेकेंड डे। आज भी मुझे बहुत नर्वस फील करुचे। मु जहाँ निजे जमी मु आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करुचे घरे से ठीक एक्जाक्टली मुझे आपको से ही देखा यदि कहिबारे कि एक्सप्रेस करिबारे किसी प्रॉब्लम होता है सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक अच्छे तो से एमती सबुदिन आम गोटे गोटे एथिक्स गोटे गोटे क्वेश्चन को डिस्कस करुवा आ लिखुवा तेज जाकि आपंकर भी प्रैक्टिस हे आ मोर भी प्रैक्टिस हे। तो ये क्वेश्चन में मुझे आउ कौन किसी ऐड करी कि कौन लिखिपारि जदि आपण मैंने कमेंट मते सजेशन दियंते बहुत भल हुआ। जदि ए भिडियोटी आपको भल लगुच कि आपण काम आसो बोली आप भावुंट तो दयाकोरी भिडियोटी को आपर सांग सहित भी आप सेयार करेंगे। आम चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।